scholarship, what is it about, and if you have any queries or questions regarding that scholarship, you can ask me. Also, we'll discuss a lot of programs that are being offered. I also delivered webinars in the last year as well, but now again, every new year when the scholarship is announced, a lot of new programs are also added in the scholarship. So it keeps on updating. So I mean, there are always new programs in the list for Erasmus Mundus. It's basically a master's scholarship program. So this is for the students like who have finished their undergrad studies or who are about to finish their undergrad studies, like they're in the final year of their undergrad studies. So after, like, for example, if they're in the 7th semester or 8th semester, then they can apply for it, and they for in 3 or 4 or 5 months, they will get back with the results or outcomes of the scholarship, and then they can just start their program the next fall semester for the upcoming year. For example, now this is 2021, right? So now the scholarships are open. You can apply. Normally the window for applying the scholarship is starts from October and it lasts until January or February. Some programs also in March. So this is the window in which you can apply for these scholarships. So let's start, like, what is this Erasmus Mundus scholarship program? So I've just a review for those who are new. It's basically a scholarship program by European Union, and most of the countries that offer these programs, and they are in Europe, and all the universities, the consortium of universities, basically the universities in which you're going to study, they are mostly from Europe. Now they've also included some of the countries from other areas as well, but mostly they are from Europe, right? So it's a fully funded program. Fully funded means that, okay, all your expenses are covered in the scholarship program, right? So it means that your tuition fee, it's also covered, your living expenses, they are going to give you monthly stipend, and your traveling expenses, they are also covered, right? And you have also got some insurance, health insurance as well. For example, God forbid, if you get some kind of like sick or something, it is also covered in that program. So it's a very good program for students. And normally the duration of this program is 2 years. You have like kind of 4 semesters. Finally, the 4th semester is most of the time the thesis semester, in which you're going to do your research project in a company or in a university. It depends, and how your program has been structured. So some of the programs you need to like complete in university. For some, you can also have your project in the different companies across Europe. And if you do your thesis with them, maybe later on you get chances that, okay, you get some scholar like job there as well in those companies. So normally the duration for this program is 2 years. 2 year means like, okay, 4 semesters. The first 3 semesters will be like the courses. You will have to complete the coursework for that specific program, and then the 4th semester is the thesis or the research project. Already I discussed the course level is basically it's a master's degree program, right? All the programs, they are basically designed for master's level. So even it doesn't mean that, okay, you already have done your master's here, you can still apply for that. But a condition that is there, for example, if you already secured Erasmus Mundus scholarship, then you cannot apply again for that specific scholarship. So that is only one condition. Otherwise, like even if you have done your masters here, you are still eligible for applying for another masters, and you can apply for this scholarship. So what is the deadline? Deadline is already said. It's different for different programs, right? It means that the window has already started. It starts from October, right? And you can start applying from October until January or February or even March. So it depends on the different program. We'll see in a while that how the deadline differs for different programs and what are the different programs that are offered during this scholarship. All right. Okay, I already said it's a fully funded. It means that all the expenses are covered, right? You also get some monthly stipend around 1,100, 1,200 euros per month. And the tuition fee is also free.
So it's a fully funded master's program, and that is the main attraction for this one. And also along with that, you get to travel in different parts of the Europe and in different universities. So they also provide you traveling allowance. Like for example, if you want to travel after one semester to another university, they will also provide you that traveling allowance so that you can travel during that program. You international airfare tickets. They provide you the money from which you can buy your tickets as well. So it's also in part of that traveling allowance from country to country and all those things. And another important aspect of this scholarship is that it doesn't have any bond. कभी कभार ये होता है कि आप कुछ स्कॉलरशिप से अप्लाई करते हैं जिस तरह फुल ब्राइट है यूएस की तो आपको दे हैव सम काइंड ऑफ लाइक रिस्ट्रिक्शन दैट यू नीड टू कम बैक टू योर कंट्री एंड देन स्टार्ट working here for some period of time and then you can return back to US. But here in this program, the good thing is that there's no bond or no restriction to return your country. So, for example, after finishing your master's, you can start working there as if you get hired by a company, or you can get a job there, or maybe you can continue for your higher studies for PhD or other programs. So it's a very good, basically, aspect of this scholarship that you are not bound for anything. So a good thing regarding this is that after completing your studies, you're free. And also some of the countries, they allow you like kind of those work visas. You can apply for that after completing your studies, and you can start looking for a job and things like that. I am myself. I did my master's on Erasmus Mundus program, but it was quite a long time ago, like maybe 12 years back, from 2008 to 2010. I was also selected for one of the programs. So I never heard of anyone like who has returned. I mean, all my colleagues or the friends who joined this program, they either got jobs there or they got PhDs, and sometimes depends like on your own circumstances, but most of the time it's easier basically to settle after completing your Erasmus Mundus master's program. So if you have any intentions of like permanently staying there, it's possible after completing this master's degree. So it's like Fulbright of Europe. Like I think most of you would be aware of the Fulbright program by US. So you can say that it's also a very good program, but it's you can say Fulbright program of Europe. So there's another name you can give it. But yeah, so with so many benefits I already described, this is a very good opportunity, especially, and I already know that a lot of people get selected from NUST, a lot of students apply from NUST. Now, what is this? Now we get into a bit of detail regarding this scholarship. So I will also put this presentation in the files folder. You can later on access it as well. And here are two links, the very useful links that give you an idea like what the scholarship is about. And this is the catalog for the different master's programs that are offered each year. For example, now you can search for different programs that are currently available and you can apply for those programs. All right. So I am going to paste these links in your message box so that you can by yourself click on these links, and then we can just together go through these links that what are these about. All right. So I'm putting these links in the message box, and just go through these links, and then we'll discuss in a while that what is it about. We'll go through the catalog as well. I will give you a brief intro like how you can search for different programs related to your field. And then what are the different requirements for those programs. So I am also putting the second link in the chat box as well. You guys have got the links. Okay, let's check the first link.
click on this link and it will take you somewhere here. Okay, let me share that one with you. I have opened it. Okay, you can see now here the screen. Yes, sir. Okay, so it says European Education and Culture Executive Agency. So this is the basically it gives you all the details regarding the Erasmus program. So here you can see in the scholarships, right? If you now I have clicked on the tab for scholarships, and here you can see EMJMD Catalog. Can you see that? All of you can see that? Yes, sir. Okay, so if we click on this, then it takes you to another screen. Here you can see Erasmus Mundus Joint Master's Degree, Erasmus Mundus Scholarship. So it says Master's Opportunities for All. So here it gives you a bit of detail about like what is Erasmus Mundus Joint Master's Degree. If you see at the start, it says like it's a prestigious integrated international study program that is jointly developed by an international consortium of higher education institutions. So basically it's a consortium. कंसोर्शियम का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना, या मिनिमम 2 यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ेंगे, या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. कुछ प्रोग्राम्स में 3 यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, किसमें 4 होती हैं. तो आप मिनिमम कंसोर्शियम होता है यूनिवर्सिटीज़ का, और आप एक सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या एक साल एक यूनिवर्सिटी में, और सेकंड ईयर यू कैन गो टू सम अदर यूनिवर्सिटी एंड थिंग्स लाइक दैट. सो इट्स बेसिकली कंसोर्शियम ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. So students at master's level from all over the world can apply. So it's open to everyone, right? So it also says that you can read more about EMJMD here. You can, if you click on this link, then it will give you further information on that. We already discussed that. And then here you can see after that frequently FAQs, frequently asked questions, right? So if you click on that, it will also take you to another window. Here it basically answers your all the queries. There are about 39 FAQs there. You can see like, oh, it gives you some details that are frequently asked from them. So it, for example, can I apply for Erasmus Mundus joint degree, master's degree, right? So this is a basic question that everyone asks, like, oh, well, how can you apply? So it says that, okay, it's open to applicants all over the world. Further conditions apply, right? It means that, for example, you need to have a first higher education degree. It means like a 16 years higher education degree. You need to have that, right? And then there are eligibility requirements for each program, right? In which you are interested. So we'll see like what are the different eligibility requirements. अब हर एक प्रोग्राम की अपनी एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग का अगर कोई मास्टर्स प्रोग्राम है तो उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होंगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अंडरग्रेड डिग्री आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ मास्टर्स डिग्री इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट, तो उसका बैकग्राउंड वो मांगेंगे कि या तो आपका अंडरग्रेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो, या आपका BS कंप्यूटर साइंस में हो, या आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो. सो इट्स रिलेटेड, आपकी कोई रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए ताकि आप एलिजिबल हों उस फर्दर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए. सो हर प्रोग्राम की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है. तो हम देखेंगे अभी कि वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हम सर्च करेंगे कि उनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एंड हाउ यू कैन गो अबाउट दैट. बट so here it is, I was talking about like different FAQs, so you can go through these FAQs as well. There are about 39, and it will basically help you a lot in understanding this master's program. And if you have any further query, you can ask me as well. I'm here. Right. Another important thing is that, okay, you can apply for more than one program. So it's not like that you can only apply for one program. So you can apply for more than one program. And then here's an FAQ. What should I do if I receive provisional offers from 2 Erasmus Mundus joint master's degree programs? So what does it say? It says that if you have been selected provisionally by more than one course, we advise you to contact the 2 EMJMDs concerned. Getting more information about the courses will help you make your final choice. So luckily, if you get selected for 2 programs, then you need to decide on your own that, okay, which program you're going to select. So the one that you're going to select, the other will automatically that you will refuse admission and they will not like take you in that program. So
it can happen like, for example, you get selected for more than one program, and you can also apply for more than one program for these master's programs, right? So it gives you a lot of opportunity that, okay, if you cannot get selected for one program, maybe you can get selected for another program, a relevant program that you are interested in. All right, so you can go by yourself through all these FAQs. So I will leave it here and we'll go back to that catalog that initially we were discussing. So let's go back to that catalog. Okay, we were here. You can see the screen, the catalog screen. आप लोगों को ये कैटलॉग नजर लिखा हुआ आ रहा है EMJMD कैटलॉग in bracket 135. Okay, so this is basically the catalog, year of student intake. Okay, I will remove that filter. So here you can see कि ये एक यहाँ पे आपको सारे मास्टर प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाएगी. यहाँ पे 149 मास्टर प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं in year for year 2022, right? So on the left side you can see filter by. All right. So what does it mean? So here you can search for your own program. आप filter कर सकते हैं keywords के through, right? Okay, just give me one keyword, for example, and we can just search. I can show you like how you can search for your own program. Then we have country. By country, you can also select where you are more interested going. So they have a list of countries there as well, starting from France and going until Georgia, Latvia, Sri Lanka, and Croatia. So there are multiple countries in Europe as well, and also outside Europe, but most of them are in Europe. Then you can also select about credit hours. So most of the time ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 120 ECTS होते हैं, मतलब 2 साल के होते हैं. लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं कि वो 1 साल के भी होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम प्रोग्राम्स हैं वो 2 साल के होते हैं. एंड आई वुड प्रेफर कि 2 साल में को फ़ायदा ये होता है कि आपके साथ मास्टर थीसिस भी हो जाता है, राइट? इट्स मोर a complete degree as compared to 1 year program. So then you can also select by EMJMD universities, right? So they have also given a list of universities here. If you're interested in going to some specific university, you can search here as well. All right. Then field of study. So here it gives you a lot of information about your field of study. For example, if you want to go to, let's say, chemistry, economic sciences, environmental and geosciences, information science and engineering, life sciences, mathematics, physics, and social sciences and humanities. So they have a lot of fields of your interest where you can apply. Year of project selection. अब इसमें year of project selection में क्या होता है कि किस year में उन्होंने वो project या उसको start किया है program को, right? तो ये डिफरेंट वेरी करता है. नॉर्मली एक प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है ना वो 5 साल तक की होती है. तो 2017 से जो स्टार्ट हुआ वो 2022 तक रहेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट इस तरह वो उनको एक टाइमलाइन देते हैं. देन अगेन दे हैव टू रिन्यू दैट प्रोजेक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट. ईयर ऑफ स्टूडेंट इनटेक, आप किस ईयर में स्टूडेंट्स ने आना है. सो इट आल्सो गिव्स यू अ लिस्ट कि आप किस, फॉर एग्जांपल, कौन से प्रोग्राम कब तक स्टूडेंट्स को ले सकते हैं. सो इट आल्सो गिव्स यू दिस फिल्टर एज वेल. बट मेनली जो मेन चीज़ें आप यहाँ पे कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम में. ओके, इफ यू एनीबॉडी वुड लाइक टू, लाइक, इफ यू कैन टेल मी लाइक व्हाट यू वुड लाइक टू सर्च अबाउट, आपकी फील्ड कौन सी है, एंड देन वी कैन सर्च अबाउट इट. फॉर एग्जांपल जी embedded, right? Okay, let's say embedded we can put here, and we can put the filter here, and when we click it, so it will show you some of the programs like European Masters in Embedded Computing Systems, right? So this one program popped up, and that is a master program in embedded computing system. So project locations here at the bottom you can see project locations कि कहाँ पे ये होगा, कंसोर्शियम कितने यूनिवर्सिटीज का है. ये कंट्रीज जो उन्होंने बताए हुए हैं, जर्मनी, इटली, नॉर्वे एंड यूनाइटेड किंगडम. And then again you will see a website here as well. तो अगर आप इस पे क्लिक करें, इसका शॉर्ट उन्होंने वर्जन रखा हुआ है EMAX, or we can just say EMECS, right? So if you click on this link,
It will take you to the actual website of that program. तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो नजर आएंगे वो आपको सिर्फ उनके लिंक्स नजर आएंगे प्रोग्राम्स के। फिर नीचे आप जो उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको एक्चुअल वेबसाइट पे जहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी आपके प्रोग्राम की कि वो प्रोग्राम किस तरह का है। यहाँ पे अगर आप देखें हमने उस लिंक को क्लिक किया तो यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, स्कॉलरशिप क्या है, अप्लाई नाउ, प्रोग्राम की डिटेल्स हैं कि उसका करिकुलम क्या है, टीचिंग स्टाफ, कैरियर अपॉर्चुनिटीज, मोबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स, राइट। स्टूडेंट लाइफ, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट लाइफ किस तरह की होगी, राइट। And so they have a lot of things here, events, extras, FAQs, downloads, things like that about. So let's go to the first one, admission, right? Even if you, before going to the admission, if you just go to the main page, so it says welcome to our website, right? Here, this guy, he's the coordinator. And so what does it say? You have earned a bachelor's degree in electrical engineering, computer science, or related discipline. If your ambition is to deepen your expertise, right, in this specific area, you can apply for this course, right? So it says, okay, you're already saying something like if you have a background in electrical engineering, computer science, or a related discipline. So यहाँ पे just he is welcoming you for this one. So more details we can find here. For example, if you go to the admission and you can go requirements. तो ये क्या है जी, इस embedded systems का somebody said, so it's what type of degree is required. So they're saying like you need to hold a BSc degree in electrical engineering, computer science, computer engineering or a related program. तो इसका मतलब है कि अगर आपकी mechatronics में भी डिग्री है, so most probably you will be able to apply for this one as well, right? mechatronics में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री है तो स्टिल आई थिंक यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस वन. सो आई थिंक इट्स अ रिलेटेड डिग्री टू दिस प्रोग्राम. सो दे आर सेइंग गिविंग मल्टीपल ऑप्शंस. तो एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जो रेलेवेंट डिग्री हो सकती है, क्योंकि ये इट्स मोर रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, तो आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो मैकेट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है. सो यू स्टडी इन आईटी में भी पढ़ते हैं. सो मे बी इफ यू हैव BS IT, still I think you will be able to apply for this one as well. So it depends कि आपकी relevance कितनी है उस प्रोग्राम के साथ. Is it making some sense? Any question up till now? Is it clear? Yes, sir. It's clear. Right. So here they are saying about the required degree. यहाँ पे आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट्स उन्होंने कहा है इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक मस्ट रिक्वायरमेंट है इन सारे प्रोग्राम्स के लिए. तो आपको IELTS अप्लाई करना होता है. तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो लोग फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर में हैं अंडर ग्रेड डिग्री के, दे आर इन देयर 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर, तो IELTS नॉर्मली आपको जो वैलिड होता है वो 2 साल के लिए होता है, तो आप उसको प्रिपेयर कर लें एंड देन यू कैन टेक IELTS एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट. सो हर एक जो प्रोग्राम है उसका अपना एक रिक्वायरमेंट है कि IELTS जो है ना वो कौन सा स्कोर एक्सेप्टेबल है फॉर ईच प्रोग्राम. सो नॉर्मली here they are saying that they need to prove that they have sufficient fluency in English. We normally ask for IELTS 6.5 overall with at least 6 in each competency, right? और IELTS के बाद आप फॉर एग्जांपल TOEFL भी दे सकते हैं. TOEFL का है कि वो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें किस तरह का स्कोर चाहिए. सो इट डिपेंड्स. सो बोथ आर एक्सेप्टेबल, बट फॉर यूरोप आई थिंक मोस्टली पीपल दे गो फॉर IELTS. तो IELTS जो है वो आपको वो कह रहे हैं कि हमें जो ओवरऑल स्कोर है वो 6.5 चाहिए. ओवरऑल स्कोर 6.5 का मतलब ये है कि किसी मॉड्यूल में आपके 6 भी हो सकते हैं, किसी मॉड्यूल में आप 7 भी 8 भी हो सकते हैं, राइट. लेकिन ओवरऑल जो बैंड है आपका वो 6.5 होना चाहिए. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम. आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल प्रोग्राम्स, राइट. सो जस्ट बी प्लीज कीप दिस इन माइंड कि हर एक प्रोग्राम की अपनी जो है ना रिक्वायरमेंट है कि आपका IELTS का जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए. ऑलराइट. उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि GRE. अब GRE एक बहुत इंपॉर्टेंट है. लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन करते हैं कि जी GRE जो है वो इज इंपॉर्टेंट, वी शुड अप्लाई फॉर इट और नॉट. फॉर Erasmus programs GRE is not must. It's not like required. But if you already have taken the GRE, it adds to it, right? It helps you in getting the admission. तो एक दफा मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त था, तो उसने अप्लाई किया, तो he was in reserve list, right? He didn't appear in the first or second or third merit list that was initially
uploaded by that for that specific program. तो उसने कहा कि जी मैंने GRE एग्जाम भी दिया हुआ है तो आप मेरा ये भी कंसिडर करें तो maybe I can get some chance. So he submitted that GRE score to that specific program and then they allowed him, they selected him in the third or fourth merit list. तो ये depend करता है कि कुछ circumstances में आपको GRE can help you out in securing basically a position or a scholarship, but it's not a must, right? So it's basically an added advantage if you have already taken GRE exam and you can just submit it along your other documents when you are submitting your application. Motivation letter. This is also must, like हर program में almost they ask you for a motivation letter कि why are you interested in this program. The motivation letter जो है ना वो बहुत से लोग पूछते हैं कि जी मोटिवेशन लेटर जो है उसमें क्या लिखना होता है. मोटिवेशन लेटर, you know, as it is clear here, what they are saying is that applicant must show that she is well motivated for the embedded computing systems program by writing a short letter of motivation about 1 page. अब यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया 1 पेज. कुछ प्रोग्राम्स में वो स्पेसिफाई नहीं करते तो कुछ लोग जो हैं वो 1 पेज से ज्यादा भी, लेकिन मैक्सिमम जो मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप 1.5 पेज या 2 पेज से ज्यादा का मोटिवेशन लेटर ना लिखें. मैक्सिमम यू शुड ट्राई लाइक टू स्क्यूज इट इन 1 पेज और 1.5 पेज. दैट्स मोर देन इनफ, राइट? तो मोटिवेशन लेटर में लिखना क्या होता है? यहाँ पे ये वो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई यू आर मोटिवेटेड फॉर दिस एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स प्रोग्राम. सो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे? Somebody asked me कि आप embedded ट्राई करें. So what would you write? I would like to ask. किसने मुझे कहा था कि जी embedded लिखें? So I mean जी. Embedded पे maybe इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि फाइनल प्रोजेक्ट उसमें कर रहे हैं तो ज़्यादा नॉलेज है उस एरिया में. देयर इज लाइक अभी काफ़ी गैप है कुछ चीज़ों में जो कि फिल किया जा सकता है मज़ीद उस पर रिसर्च करके, तो इसलिए इंटरेस्टिंग है. Okay, good. So now Zainab, as you mentioned that okay, she might be interested because she's already part of you. You're in from which degree? जी आप electrical engineering से हैं? Yes sir. Okay, so she's from SEEKS. So she said that she was already doing undergrad degree in electrical engineering. So that's very much related because she has studied various courses related to computing systems or embedded systems. So here she can mention that okay, I already have studied these courses and the courses that are being offered in this program. So I think it will be beneficial for me because I already have the background and things like that, right? So if then you can also mention that she has done some kind of like project related to embedded computing systems, right? Maybe her final year project is related to embedded computing systems, right? Then she can say that she has done some internship in some company, right, where she worked in the area of embedded computing systems, or she's doing some freelance work in which she's working or she's working on projects related to embedded computing systems. So there could be multiple things that you can mention in your motivation letter. Apart from that, कि आप अपने आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड है, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, how it could be helpful in your future, why are you interested? Maybe you want to select this field because you're more interested, you have been doing all these projects and things like that, and your grades are too good in these areas, right, in these courses. And further, you want to like become a data scientist or become an embedded software engineer, or you want to work for some software companies. So maybe these are some of the motivations that why you are pursuing this program. Then you can also say that okay, for higher education you have gone through the curriculum of this specific program, right? आपने इसको देखा है और आपको लगा है कि यहाँ पे जो courses offer किए गए हैं वो मतलब state of the art है, right? So they are often basically they are focusing on some of the key the areas on which the research is being done or being conducted, or on which the companies are working, or for example जिन companies के साथ ये specific program linked है, those are very like
world renowned or famous companies, and they are working on some top notch research areas and things like that. So you can also mention those areas by just having a greater look at the curriculum and like with which companies this program is linked or things like that, who are the sponsors. तो वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है कि आप वहाँ उसको लिंक कर सकते हैं इन योर मोटिवेशन लेटर, ऑलराइट. थर्ड ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जब आप 2 या 3 4 जगहों पे जाएंगे, इट विल आल्सो हेल्प यू टू बेसिकली ग्रो योर नेटवर्क एंड आल्सो इट विल हेल्प यू टू सोशलाइज अ लॉट, लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स. सो ये भी कभी कभार आप मोटिवेशन लेटर में मेंशन करते हैं कि दैट इट आल्सो हेल्प यू groom yourself as well as a person, as well as in the area of academics and things like that. So there are multiple ways in which you can just mention like why you are interested in such program, right? Starting from your own basics like your background, your projects, your internship or experience or job, and then for example the curriculum that is being offered and how are the researchers that are who are or the faculty that is teaching this specific courses. Maybe they are very well-known researchers in their areas. So you can link in different dimensions in your motivation letter. So these are some of the aspects that I would like you to incorporate. And then also finally, what are your future plans? Like I also mentioned, for example, आप ये program क्यों लेना चाह रहे हैं? Maybe you want to work for some specific companies who are linked to this program, or you want to become a software engineer or embedded computer engineer or things like that. So that is your main goal, or further you want to do research. So that's why you are taking this program or you're interested in this program and things like that. So all of these things you can include in your motivation letter. Okay, this was about motivation letter. Then recommendation letters. अब ये क्या होते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं? अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रिकमेंडेशन लेटर भी चाहिए. Application must be supported by 2 letters of recommendation from university professors or employers. तो कभी कभार ये होता है कि लाजमी नहीं कि आप अंडर ग्रेड में अभी पढ़ रहे हो और आप अप्लाई कर रहे हो. कभी कभार ये होता है कि आपकी डिग्री खत्म हो गई है और आप जॉब कर रहे हैं और देन यू आर अप्लाइंग. सो मे बी यू कैन गेट वन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर and you can get the other letter from your previous institution जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है. So it can work both ways. राइट. रिकमेंडेशन लेटर जो होता है नॉर्मली इसकी कंडीशन ये होती है कि या तो वो यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ वो रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करा लें. कुछ में ये होता है कि आप जो प्रोफेसर हैं वो डायरेक्टली सबमिट कराएंगे या एम्प्लॉयर सबमिट कराएंगे अपनी रिकमेंडेशन लेटर टू द यूनिवर्सिटी, राइट. सो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आप रिकमेंडेशन लेटर साथ ही सबमिट कराना था एप्लीकेशन के. सो यू कैन गेट इट फ्रॉम योर प्रोफेसर और योर सुपरवाइजर ऑफ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट or your current employer where you're doing your job, and you can submit along with that your application. So this is about recommendation letter. Further documents. For more details about the application process and required documents, please visit apply now, right? तो ये जब apply now पे जब आप click करेंगे, ये you can see that at the start we had this apply now button, right? And in admissions as well. So if you click on this apply now, so here you can see when is the deadline. So they are saying that all application must be submitted through application platform by January 31st. तो ये आपके पास अभी टाइम है. For example, you are in November, December, January. So you have 2.5 months almost. All right. And the selection results for applicants will be announced by May 2022. So it means that आपके पास जनवरी तक टाइम है for this specific program apply करने के लिए, and the results those will be announced in May 2022. So they have given you all the details here for this specific program. All right. And academic, so यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि आपका कहाँ पे होगा अगर आप let's say you get selected. So academic calendar is like you will start in August in Germany, then your second semester will be Norway, then end of September Southampton or Italy. So it depends कि आप कौन सा I think select करते हैं. So it will help you that how you select the program and how it is going to start. For example, start of the program is generally as follows, right? Of the chosen partner university. तो कुछ प्रोग्राम्स में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं. कुछ में आपके पास ऑप्शन नहीं होता. तो आप जिस यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है कि वो प्रोग्राम कब स्टार्ट होना है. अगर आप
लेट्स से नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं तो उनका बिगिनिंग ऑफ अगस्त है, लेकिन अगर आप लेट्स से पॉलिटेक्निक को दी टोरिनो इट्स इटली को स्टार्ट करते हैं तो देन इट्स एंड ऑफ सितंबर. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करते हैं इन योर एप्लीकेशन. अब along with the application form the following documents must be provided. तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें कौन कौन सी आपको चाहिए. पर्सनल डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, CV आपकी होनी चाहिए, प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, पासपोर्ट. अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोशिश करें कि आप अपना पासपोर्ट जो है ना वो बनवा लें. फॉर एग्जाम्पल यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग स्टडीज फॉर अब्रॉड, ठीक है. पासपोर्ट अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप it doesn't take much time, you can just go to passport office and you can take it in a week or two, you can get your passport, so it's not a problem. So you must apply for your passport, right? So that normally they require proof of nationality and you can put your copy of passport there, you can attach that copy of passport. Then you copy of university degrees. नॉर्मली अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी ऑलरेडी डिग्री खत्म हो गई है तो आपको जस्ट एक डिग्री चाहिए होती है आपकी, जो भी बैचलर्स की है या मास्टर्स की है, एप्लीकेबल जो भी एप्लीकेबल है, ठीक है, उसकी कॉपी आपने सारा अटैच करनी होती है. लेकिन अगर आप अभी 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में हैं देन व्हाट यू कैन डू, तो वो आपने फिर अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं, राइट, stating which courses were taken and what grades were obtained at the time of application. और आप ये कह सकते हैं कि you are still enrolled in the university, right? You can get a letter from the university that okay, your course is going to get completed, let's say in spring 2022, right? So then you can also attach with that. So this is also acceptable for most of the programs. Translation of certificates and transcripts of record if not in English. तो मोस्ट ऑफ टाइम पाकिस्तान में तो ज़्यादातर जो है ना आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स और रिकॉर्ड्स और इंग्लिश में होते हैं, बट समटाइम्स व्हेन दे आर नॉट इन इंग्लिश देन मे बी यू नीड टू गेट दोस ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश. मोटिवेशन लेटर चाहिए, वो ऑलरेडी वो डिस्कस्ड कि वो two recommendation letters from faculty staff or your employer, right? At least one should be from a faculty staff. So you see तो वो कह रहे हैं कि आपका एक लेटर एटलीस्ट जो है ना वो फैकल्टी स्टाफ से होना चाहिए जब अप्लाई कर रहे हो, फ्रॉम वेयर यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री. प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो आपके पास होना चाहिए, IELTS आप दे रहे हैं या टॉफल. GRE रिजल्ट्स, स्कैंड कॉपी, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और आपके पास हैं रिजल्ट्स तो देन रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी. सो इट्स रिटन देयर रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ at the end they are saying that all documents need to be submitted electronically. All right, however the original documents and final certificates will be requested by the academic authorities before enrollment. तो आपको पहले साथ लेके जाने होंगे और वो they will check all your original documents and certificates. All right, so this is the process for that specific program. इसी तरह हमने अब ये एक प्रोग्राम देखा है, तो अगर आप let's go back to that catalog and now we can see कि और कौन से programs available हैं. So I mean this is just one, somebody said embedded, so we just selected that. So even you can, if you don't put the keyword and you just put like for example field of study, let's say field of study कौन सी select करनी है जी, information science and engineering. All right, I click on that and then I search it. It will come up with the options of like, let's say how many programs. It says like, okay, first one is like engineering of data intensive intelligent software systems. So even person with the background of electrical engineering, computer engineering, they can apply for this one. And then at the bottom, they have given the link for that specific program and the project locations. All right. Fire safety engineering, Master of Science in Imaging and Light and Extended Reality, Joint Europe Masters on Advanced Robotics. So this is another program. It's Japan Europe Masters. So it's not, sorry, joint. So it's Jimaro. So maybe one of the location is Japan. So maybe we will have to spend some of the time in Japan as well for this specific program. Then you have intelligent field robotic systems. So it's Spain, Croatia, and Hungary. Then you have joint master in medical imaging and applications, and then masters in material science or energy applications.
So you can see like there are a lot of programs related to information science and engineering. And you click on some of these, then you can see, okay, what is the deadline? For example, let's say European Masters of Science in Sustainable Food Systems, Engineering, Technology, and Business. So you see, this is a very unique program. So let's see what are the requirements for this one. Food 4S. You guys can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here you can see like they are explaining like what is this Food 4S program, a joint degree of 4 European partner universities. So it's I think Ireland, it's Belgium, Italy, and some other university. More information or admission requirements. So if we click on that, okay, application deadline is 1st of March. Here you can see all nationals applying for this program with Erasmus scholarship. 1st of May for other ones, for non-Europeans, for Europeans. So 1st of March is for scholarship programs. Sometimes they have deadlines for example, people who want to like join on their own yeah, expenses, then they are given a bit of extension. But for scholarship, 1st of March is the deadline. So let's see like what is there in it, more information on admission requirements. So what is the background that they need for this specific program? So this is a very unique, like sustainable food systems, engineering, technology, and business. I think you can apply from a very diverse background for this program. Admission requirement, a Bachelor of Science degree in a relevant area of studies giving access to a master program. So they didn't mention anything like, okay, what type of degree in a relevant area of studies? For whom? Okay, this is interesting. So they didn't mention anything कि आपको उन्होंने कहा कि just आपकी एक BSc degree होनी चाहिए. So it means that you have a lot of options. Even if you are from business background, you're from IT background, you are from uh, engineering background, you can apply for it. Even if you're from, I think, uh, let's say, yeah, most of the time I think it's engineering, technology, and business. Even you're from business background, I think you will be able to apply for it. So they didn't give any proper just they said Bachelor of Science degree. So it means like they have a lot of options. They will consider people from a variety of backgrounds. Okay, so this is good. Application documents. Application procedure includes proper submission of the core documents. So here they have put like core documents. Let's go to this, like what type of documents do they require? Okay. Core documents include like PDF scans of your diplomas and transcripts of academic records. Okay, you need to apply that. That's obvious. So PDF scan of your translating your diplomas, translation if it's not in English. English proficiency certificate. So this is core. English proficiency is required everywhere. So better you just take IELTS as soon as possible. PDF proof of the payment of the application fee made as a bank transfer. Okay, they have a payment fee as well. Okay, you need to attach that proof of payment as well. Then PDF scan of identity page of your passport. Same, you need to upload your passport. If you currently hold a Belgian residence, no, that is not a correct PDF of your motivation letter. Recommended size 1 A4 page. So as already said that you should not exceed more than 1 page or 1.5 page, and then your CV. So these are the core documents that need to require for this one. Recommendation letters. If the required for the program, please upload the letters to your online application file. You can download template. तो कभी कभार आपको template भी दे देते हैं recommendation letters के, you can just take from here and you can apply. All right.
So these are some of the conditions for this specific program. So this is interesting. So after the selection and admission, 1st June onwards. So you are saying like, okay, middle of April, they will communicate all the details of the application and outcomes and things like that. So you see, it seems like this is a new program because they haven't particularly given any requirements or things like that. So maybe it started newly. So there are higher chances कि जो नए program होते हैं उसमें selection के chances जो है ना वो ज़्यादा होते हैं. Okay, right, good. Let's go back. So it's, you can apply for this program. The application deadline is 1st of March if you're interested. So apply now. Here is the link for applying online. Before that, please get ready your all the documents and the list of documents that they have asked for. Okay, this is the application instructions, right? So it will open on 14th of October, right? So 1st of March the deadline. So I think it's open now. You can apply for it. Okay, they have this application fee of 75 euros. It can be paid via online credit card, right, or a bank transfer. Okay, good. So this was this program, European Master of Sustainable Food Systems, Engineering, Technology, and Business. So similarly, we have other programs as well. आप में से कोई और सर्च करना बताना चाहेगा कि कौन इंटरेस्टेड हो किसी प्रोग्राम में. If you want to have a look at that specific program, we can just search for it. Give you an idea that how it will be. Maybe उसकी requirements अब हर एक प्रोग्राम की डिफरेंट. जिस तरह हमने देखा कि एम्बेडेड सिस्टम्स को उन्होंने पर्टिकुलरली बताया हुआ था कि आपको किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए. तो बाकी इस जो हमने अभी प्रोग्राम देखा था इसमें उन्होंने जस्ट BSc डिग्री मांगी है in any discipline. So it means that it's more diverse. Okay, anyone else would like to inquire about something? कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहेंगे? No. Social sciences का हम देख लेते हैं, right? If somebody is interested in social sciences. Okay. तो सोशल साइंसेस के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल वन इज जॉइंट मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड यूरोपियन इंटीग्रेशन EGEI, international masters in dance knowledge practice and heritage, clinical linguistics, global development policy, master in work organization and personal psychology, international masters in security intelligence and strategic studies. So this one is interesting. So if you have a look at that, let's go to its website and see like what does it offer and what are the requirements to apply for this specific program.
So here you can see like they have a list, program overview, how to apply, scholarships, consortium partners, associate partners, visa requirements, and all these things. So program overview, we can just click on the first one, that what is it about. So the start date is September 2022. All right, duration is 24 months. They have given a program overview. September 2022 में start होना यानी कि fall में. Why this program? तो ये क्यों ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे सारी रीजंस बताए हैं that why this program is useful. डिग्री अवार्ड की जाएगी, फॉर एग्जांपल मास्टर्स डिग्री इंटरनेशनल लॉ ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी पीस एंड डेवलपमेंट, राइट. डिपेंडिंग ऑन देयर सेमेस्टर 3 स्टडी ट्रैक सिलेक्शन. तो कुछ में आपके स्टडी ट्रैक्स होते हैं, वो डिफरेंट एरियाज में, आप जिस तरह आप बीबीए कर रहे हो या लेट्स से इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको एट द एंड वो ऑप्शन देते हैं कि आप किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाएं फोर्थ ईयर में. जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीपीए कर रहे हैं तो आप फाइनेंस की तरफ चले जाएं, या मार्केटिंग की तरफ, मार्केटिंग के सब्जेक्ट ज़्यादा ले लें, या फाइनेंस के ले लें, या एचआर के ले लें. तो उस हिसाब से फिर आपका एक स्पेशलाइजेशन जो है ना वो सेलेक्ट की जाती है. तो ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको डिफरेंट मास्टर डिग्री ऑफर की जा सकती हैं बेस्ड ऑन कि आप कौन सा स्टडीज ट्रैक सेलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग योर सेमेस्टर 3. तो ये मास्टर इन ऑफ आर्ट्स इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स आपको मिल जाएगी, या फिर LLM इन इंटरनेशनल एंड यूरोपियन लॉ की डिग्री मिल जाएगी, या स्पेशलाइज्ड मास्टर इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. सो इट कुड बी वैरायटी ऑफ लाइक डिपेंडिंग कि आप किस तरह का कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं. सो मे बी दे आर गिविंग यू सम ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग स्पेसिफिक कोर्सेज. ऑलराइट, ट्यूशन फी कवर्ड होगी इसमें, दे विल गिव यू स्टाइपेंड एंड थिंग्स लाइक दैट. प्रोग्राम स्ट्रक्चर किस तरह का है. ऑलराइट, लेट्स सी द प्रोग्राम स्ट्रक्चर. 24 मंथ्स का तो उन्होंने बताया हुआ है. यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो एक सेमेस्टर जो पहला है, यहाँ पे उन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है आपको कि आपने किस तरह प्रोग्राम को आप हम लेके चलेंगे. तो पहला सेमेस्टर आपको ग्लासगो में होगा यूके में, सेकंड आपका बार्सिलोना में स्पेन में होगा, थर्ड वन आपका ब्रसल्स बेल्जियम में, एंड फोर्थ वन डिजर्टेशन. तो वो आप जो आप सेमेस्टर 3 जहाँ पे गुजारेंगे, आप अपनी डिजर्टेशन भी वहीं पे ही करेंगे, राइट. सो दे आर गिविंग यू लॉट ऑफ डिटेल्स देयर, यू कैन गो थ्रू इट. सो इट्स क्वाइट सीम्स लाइक अ गुड प्रोग्राम. स्टूडेंट कैलेंडर. So this is giving you like आपका overall जो है ना breakdown किस तरह का होगा of your whole program. So this is also very good. So they're giving details of this whole program. If you go back, how to apply, right? अब how to apply पे अगर हम जाएंगे तो वो फिर आपको डिटेल्स बताएंगे कि आपने अप्लाई किस तरह करना है for this specific program. You can apply as Erasmus Mundus scholarship funded student or a self funded. तो सेल्फ फंडिंग की तो अपॉर्चुनिटी जो है तो बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि इट्स मोर एक्सपेंसिव, लाइक मूविंग अराउंड 3 countries on your own expenses, you cannot afford that. Like hardly anyone tries go for that specific option. Most of the time you apply for this Erasmus scholarship program, so this is very convenient. So all applications need to be submitted. Sorry, somebody asked a question. Okay, there's a question like any person who is already a master degree, then either it is beneficial to prescribe in personal statement or in the application. जी आप लाजमी इसको मेंशन करें, it will help you a lot because already आप उस एरिया में आप पढ़ रहे हैं, आपने further advanced courses लिए हुए हैं, it will definitely help you in application. So you should mention that in your application. Okay, so how to apply भी हम देख रहे थे, they have FAQs, you can just check their FAQs as well, and then entry requirements यहाँ पे लिखी हुई हैं कि आपकी डिग्री an honors degree or a non-UK in law, right? We will consider applications from other relevant subject.
तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि या तो आपके पास लॉ की डिग्री हो या अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट्स पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर में अगर आपकी डिग्री है, यूरोपियन स्टडीज, वॉर स्टडीज, और इफ पार्ट ऑफ द डिग्री यू हैव गेन्ड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। तो इन्होंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं कि आपकी डिग्री अगर पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है, इंटरनेशनल रिलेशंस में है, वॉर स्टडीज में है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज में है, या आपकी डिग्री में कुछ इस तरह के कोर्सेज आपने पढ़े हैं कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है लॉ की इंटरनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम। ऑलराइट, so then application deadlines, they are asking like okay कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप डेडलाइन जो है ना 21 जनवरी 2022 है। यू मस्ट इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ बाय दिस डेट। एप्लीकेशन जो बंद क्लोज होती है वो 25 जुलाई 2022 है फॉर इंटरनल सेल्फ फंडिंग के लिए। अगर स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो वो आपकी 21 जनवरी 2022 जो है वो आपकी लास्ट डेट है। Does it make sense जी? Any other question? तो हमने ये थर्ड भी देख लिया। So meanwhile, so you can just search on your own and just click on the link that I already provided in the chat box, and you can just go through different programs and search कि आप अपनी requirements के हिसाब से आपके कौन सा program suit करता है and what are the requirements and what are the deadlines. You just take note of that. आप different program search कर सकते हैं और आप एक से ज़्यादा program में apply करें। I will recommend कि आप एक program के ऊपर ना रिलाई करें, एक से ज़्यादा प्रोग्राम के ऊपर अप्लाई करें। Why? Because the more there are more chances of getting selected if you apply for more than one program. Alright, क्योंकि competition ज़्यादा tough होता है, from the whole world people are applying, so it doesn't mean कि selection नहीं होती, but just to be sure that you get selected, please I would recommend that do apply for more than one programs. All right. So this was on my side. I will just now leave it to you and just you can ask me any questions. Just go through the links that I provided. I am here to answer any queries and you can just go through it, search on your own and look for some specific programs and queries. If you have any, I am here to reply those to those queries and things like that. जी जैनब। सर यू सकते हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स पे अप्लाई करें, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि एज स्टूडेंट आपका एक फील्ड पे इंटरेस्ट होता है तो मोटिवेशन लेटर पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो। तो अगर हम ज़्यादा प्रोग्राम्स पे अप्लाई करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, मे बी आपने इंटर्नशिप और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें उस प्रॉपर फील्ड में नहीं की होती, तो ये चांसेस हमारे मतलब उसमें बढ़ा तो नहीं या फिर उससे भी बढ़ जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? Okay, good question. So it sometimes it depends. Depend करता है कि उस प्रोग्राम में कौन लोगों ने अप्लाई किया है। तो it's sometimes you आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते और किसी प्रोग्राम में आपकी सिलेक्शन हो सकती है। So that's why I'm saying कि आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम अप्लाई करें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप वो आपसे वो लिंक्ड है प्रोग्राम तो then there are higher chances that you will get selected there. But आई मीन सेइंग कि अगर आपको वो और प्रोग्राम रेलेवेंट आपको लग रहा है कि अच्छा ये मेरे बैकग्राउंड से मैच करता है, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दैट। सो देयर माइट बी चांसेस। कभी कभार ये होता है कि आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड में नहीं आते, बट इफ सम पीपल ड्रॉप, जिस तरह आप कह रही है ना कि हो सकता है आप अप्लाई दो के लिए करें और बहुत सारे लोगों ने दो प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया होता है, मोर देन वन प्रोग्राम के लिए। तो अगर वो कोई एक छोड़ते हैं देन द चांसेस इंक्रीज कि अगर वो वहां से skip करके जा रहे हैं तो then the other people who are in the waiting list they can get selected. So that's why I'm saying that it's important that okay you should apply for more than one program. राइट सर, आप मेरिट लिस्ट की बात करें, मुझे ये समझिए कि लाइक इसमें भी मेरिट लिस्ट लगती है और वो इन्फॉर्म किससे करते हैं, ईमेल के थ्रू या फिर कोई पोर्टल पे हमें जाके चेक करना होता है? और अगर लगती भी है मेरिट लिस्ट तो कितनी मैक्सिमम मेरिट लिस्ट होती है? 5 4? राइट, सो दे विल टेल यू, आपको वो खुद ईमेल करेंगे कि जी आपके आउटकम्स क्या है। आपने देखा कि अभी हमने जो दो तीन प्रोग्राम देखे थे उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि आउटकम कब होगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम उन्होंने बताया हुआ था कि मई 2022 में आपकी आउटकम होगी एप्लीकेशन की। तो आपने ज़हन में रखना है, तो आप खुद जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे नॉर्मली अपलोड कर देते हैं या आपको ईमेल कर देते हैं। इन केस यू गेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट दे विल डेफिनेटली सेंड यू एन ईमेल। अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो वो मेरिट से अपलोड कर देंगे और आपको एक वेटिंग लिस्ट भी अपलोड कर देंगे वेबसाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि आप किधर स्टैंड करते हैं। एंड मे बी इफ यू डोंट गेट एन ईमेल इफ यू नॉट सिलेक्टेड फॉर द इन द फर्स्ट मेरिट लिस्ट, मे बी इन द सेकंड और थर्ड you get selected, then they will send you an email and they will formally invite you for an interview or things like that.
ओके सर, तो आपने अभी कहा कि मेरिट लिस्ट लगने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद फिर इंटरव्यू होता है। जी जी, और कुछ केसेस में इंटरव्यूज होते हैं, कुछ केसेस में नहीं होते, डिपेंड्स। आजकल जो है ना, ज्यादातर वो इंटरव्यूज भी कंडक्ट हो रहे हैं, वो आपसे इंटरव्यू भी करते हैं आफ्टर यू गेट सिलेक्टेड, एंड देन फर्दर दिस इज अनदर स्टेप, एंड देन इंटरव्यू में कुछ लोगों के शायद अगर रिजेक्शन हो जाती है, देन दे मे बी इनवाइट द नेक्स्ट पीपल हु आर इन द वेटिंग लिस्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। सर मुझे रिकमेंडेशन लेटर का थोड़ा सा मसला ये हो रहा था कि अब जब हम लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर अपना सबमिट करा रहे हैं, तो वो एक ईमेल की फॉर्म में होना चाहिए, टाइप्ड होना चाहिए, उसको हम लोगों ने स्कैन करके सिग्नेचर्स टीचर के लेके, डिजिटल नहीं बल्कि पेन से, और फिर उसके स्कैन करके डाल दें, और एनवेलप में बंद होना चाहिए। ये किस इस तरह की कुछ मैंने सुनी थी कि रिकमेंडेशन लेटर बेसिकली ये होता है कि आपने उसको आपका जो एनवेलप पूरा सील्ड हो और उसके ऊपर स्टैंप लगी हो। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट कुछ राइट, है रिकमेंडेशन लेटर की यहाँ पे नहीं? अगेन अब आपने देखा कि हर प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट है, राइट। जब आप अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपसे पूछते हैं कि उन्होंने अगर मेंशन नहीं किया हुआ कि रिकमेंडेशन लेटर सील्ड होना चाहिए या डायरेक्टली इट नीड्स टू बी सेंड, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस दे आर ऑनलाइन, आपको वो ये नहीं कह रहे कि आप बाय पोस्ट सेंड करें, ऑलराइट। इनिशियली यू अप्लाई ऑनलाइन, और अप्लाई ऑनलाइन में ये मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि रिकमेंडेशन लेटर या तो आपको कहेंगे कि वो प्रोफेसर या एम्प्लॉयर खुद सेंड करे। अगर वो ये नहीं कहते, इसका मतलब है कि यू कैन जस्ट हैव द रिकमेंडेशन लेटर, गेट इट प्रिंटेड, गेट इट साइंड बाय द सुपरवाइजर और एम्प्लॉयर, और उसको स्कैन करके आप सारा अटैच करते हैं। फिर एक और क्वेश्चन मेरा था कि हमारी जब अगर हम फील्ड में अप्लाई करें तो उस फील्ड में एफआईपी करते हुए कुछ भी पब्लिकेशन होना मैंडेटरी है क्या? वो उससे अगर हमारी पब्लिकेशन ना हो तो रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? सर आई मीन कि मैं जिस तरह एम्बेडेड में अगर अप्लाई करना चाह रही हूँ और तो उसमें मेरी उस फील्ड में किसी भी प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की कोई पब्लिकेशन हो, एज एन रिसर्च पेपर लिखा हो, एज एन उसको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, और अगर मेरी पब्लिकेशन फॉर एग्जांपल नहीं है तो क्या मेरे रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं? इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। बेसिकली आप, अब मैं आपको अपनी मिसाल दूं कि आई जस्ट ओनली हैड माय जीपीए, राइट, सो आई डिड नॉट हैव एनी पब्लिकेशन। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट, कि वो आपके साथ और कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और व्हाट इज देयर लाइक हाउ इज देयर प्रोफाइल, राइट। तो मेरी, फॉर एग्जांपल, आई हैड ओनली लाइक व्हेन आई अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप आई जस्ट हैड 3.82 CGPA, बट दैट वाज लाइक आई वाज वन ऑफ among top 10 students of us. So I just got selected based on that criteria. I did not have any publication, I did not have any other I had only one internship, I also didn't have any job experience. तो ये क्राइटेरिया जो है ना, डिपेंड करता है कि ओवरऑल आपकी इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है। आपके अपना ओवरऑल आपका रिकॉर्ड किस तरह का है, आपकी जीपीए कितनी है, जीआरई अगर आपने दिया हुआ है, या आपकी पब्लिकेशन है, या आपका जॉब एक्सपीरियंस है, या आपकी इंटर्नशिप है, या आपके प्रोजेक्ट्स हैं। सो द मोर यू हैव द बेटर इट इज, द बेटर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग selected for that program. Right, so it all depends upon the competition that you have. Exactly, कि आपके साथ और जो लोगों ने अप्लाई किया उनकी प्रोफाइल किस तरह। राइट सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आपने कहा, आई एम सॉरी अगर आपने बात मेंशन की हो पहले, पर मैं रिपीट करना पूछना चाही थी कि वंस इन अ ईयर होती है ये स्कॉलरशिप, और क्या वो सेम टाइम पे, जिसमें फॉर एग्जांपल इस जनवरी में है डेडलाइन 2022 की, तो क्या 2023 में भी सेम जनवरी में ही डेडलाइन होगी सेम प्रोग्राम की? I think in most cases yes, but you might have to check again, right? और वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। अभी कोविड की सिचुएशन आई है तो बहुत से प्रोग्राम ऑफर ही नहीं हुए, और शायद कुछ की डेडलाइन भी आगे पीछे हुई है। और इस चीज है कि मैं ज्वाइन तो की हुई है, लिंक पर चैट बॉक्स, सॉरी, चैट बॉक्स इस लिंक का, तो रिकॉर्डिंग इन केस आप कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग जो है ना वो इसी ग्रुप पे अवेलेबल होगी, so you can just later on play it as well. Okay, another question was from Shri Sultan.
IELTS should be passed before the deadline or can be given after the confirmation of the scholarship. I think more in ज़्यादातर cases में जो IELTS है वो पहले requirement होता है, तो वो आपको कहते हैं कि आप अपलोड करें अपनी proficiency certificate, उसमें core document जिस तरह अभी हमने एक प्रोग्राम में देखा कि core documents के अंदर उन्होंने मांगा हुआ था कि आप IELTS certificate जो है ना साथ अपलोड करें. So in most cases they require it before the application, not after the confirmation of scholarship. I think बल्कि all programs they need to have that IELTS certificate during your application phase. G. Asan. Sir, can lower GPAs make the scholarship? G. Exactly. Of course. Like example दूं कि एक मेरा दोस्त था उसने उसकी GPA थी 3.1 or something, but he had a research paper and then he had GRE, तो उसकी selection हो गई. So it depends. It varies a lot. So there's no like hard and fast criteria कि आपने specifically अगर आप topper हैं या आपकी 3.9 GPA तो आप select होंगे. I have seen people with 3 GPA, 2.8 GPA getting selected for the scholarship. Right, sir. G. Any other question? Okay, I am here, and if you have any further queries, you can just scroll, you can search on your own the required programs, go through the programs, and if you have any query, you can ask me, and we'll end up, inshallah, in about 30 minutes. I'm here. If you have any queries, you can ask me further.